So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the July 4th week current affairs. I hope you all are aware that every Sunday at 3 p.m. we are having the weekly current affairs discussion. So let us begin with the 4th week. Am I audible, visible? Okay, fine. So if you have not watched the previous videos we have done since January, so you can subscribe to our channel, go to the playlist, scroll down, and this is the playlist. So click on view full playlist. You will get these videos, and here we will is the latest one which we are discussing, but we have done the current affairs portion from January onwards. Okay. So let us begin with the first question. Which of the following article of the Indian Constitution governs the impeachment? Rather, the right word to be used is removal of Supreme Court judges. Article 170, 124, 134, 368. And this has been very much in the news, especially with regards to the removal of a High Court judge, Justice Yashwant Verma. So the removal of a High Court and a Supreme Court judge is actually the same. Process is same. Yes, Krishi Sasdeva, Adrija and Gyan, you all are right. 124. Yes, I think clause 4, right? It talks about the removal of judges, which is done by the parliament in accordance with Judges Inquiry Act 1968. Okay. Let's move on to the next one. Which of the following international airports topped Travel Plus Leisure 2025 World's Best Airport Award? So generally it is Singapore's Changi Airport, but I have told you that this time the answer is different. If you have watched my paid classes, the answer is IGA Airport, Istanbul. A is the right answer. So generally we have seen for the past many years that Changi Airport of Singapore is at the top, but this time the answer is A. Okay, Istanbul Airport in Turkey has got the rank 1 in Travel Plus Leisure's 2025 index. Okay, so A is the right answer to this question. Let's move on to the next one. According to the IMF, International Monetary Fund, UPI accounts for what percentage of India's total digital payments? UPI, you understand? I mean, I'm sure you must be aware. Who has built UPI? So National Payment Corporation of India has built it, right? So the right answer, UPI, Unified Payment Interface. The right answer is option D, 85% is the right answer. So UPI handles 85% of total digital transaction. So total transactions that were done, because there are other digital transactions also like card payment, net banking, IMPS and many others. But UPI actually out of the total digital transaction, 85%. So it's a huge number. Yes. So D is the right answer to this question. Let's move on to the next one. What is the name of the new malaria vaccine being developed by ICMR, Indian Council of Medical Research? Very important. Star market. Yes. Yes, it has been. UPI has been expanded to other countries as well, right? Huh? So here the right answer is option C, Ad-Falsivax. Yes, Adrija, Nagalakshmi, Krishi Sachdeva, you all are right. You can see ICMR. Ad-Falsivax. Okay. That is what you should be knowing about. Recombinant multi-stage malaria vaccine. Okay, let's move on to the next one. Which of the following northeastern states will host first pumped storage project? What is the right answer? The right answer is option A, Assam, right? Sorry, option D. Pumped storage, so Tripura is the right answer. Yes. So NHPC is setting up 800 megawatt pumped storage project in Tripura. Yes, National Hydro Power Corporation. Okay.
D is the right answer to this question. First such facility in Northeast. Okay. Yes. The next is recently Indian Vice President resigned, citing what reason? And under which article? So which article was invoked? Article 67 clause A. ठीक है. Right answer is option D, health reasons. Nagalakshmi, yes, right. 67A. Yes, Krishi says they were right. So he resigned citing the health reason. So D is the right answer. That is correct. And he resigned under Article 67 clause A. Vice President shall hold office for a 5-year term from the date on which he or she enters upon the office. तो यहाँ पे ही लिखा ही / she दोनों होना चाहिए ना ideally. A vice president may be writing under his / her and addressed to the president resign from her office. Yes. ठीक है. So Article 67 clause A. ठीक है. That is what you should be knowing. So D is the right answer to this question. B नहीं था. नहीं, election preparation कहाँ है? Vice President is not preparing for any other election. So he has just resigned, and he wrote in the letter because of health reasons. That is what he wrote in his resignation letter. Okay. So D is the right answer here. And Article 67 clause A was invoked. The next is, who among the following took oath as the 19th governor of the state of Haryana recently? गुलाब चंद कटारिया, आशिम कुमार घोष, मोहन लाल बादोली, बंदारू दत्तात्रेय. So the right answer is Mr. Ashim Kumar Ghosh. B is the right answer. Okay. That is what you should know. So we have seen 3 new governors. I'm sure you must be aware. We have discussed a separate class for that. Let's move on to the next one. Pi approximation day. Pi किसको कहते हैं? Pi is like this. है ना, 22/7. है ना, जो सर्किल का जो एरिया होता है. Let's say this is R. So the area of the circle will be pi r square. This pi is 22/7, right? तो 22/7 यहाँ है कि नहीं? कैसे लिखोगे? 22/7 2025 ऐसे लिखोगे ना डेट. So 22/7. The right answer is B. ठीक है. हाँ, उसी को पॉइंट में 3.14 लिखते हैं. Yes. Yes, Nagalakshmi, Rishi says Deva, you are right. B is the right answer to this question. Okay. The next one is, who is the subject of the new biopic as India's first F1 driver? बायोपिक समझते हो ना? बायो प्लस पिक इज बायोपिक. जैसे को होता है बायोग्राफी, तो बुक होती है अबाउट समवन. बायोपिक मतलब फिल्म अबाउट समवन. अ वेरी फेमस F1 ड्राइवर. Yes, Narayan Karthikeyan. C is the right answer to this question. Okay, and the filmmaker's name is Mahesh Narayanan. Malayalam filmmaker. Malayalam is a language which is spoken in the state of Kerala. Okay, so C is the right answer. Yes, Adrija, are right. Let's move on to the next one. What is the name of the first joint satellite of NASA in ISRO? The right answer is option C, NISAR. NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. Yes, Krishi says they were right. Nagalakshmi, good. C is the right answer. And we have done a separate class. Please watch it. Just go to the YouTube and search this. This is very, very, very important.
If you have not watched it, I would suggest please watch it. Yes, there are L and S2 bands. Yes, L band by NASA, S band by ISRO. Good. Very good. That is what you should be knowing. Okay, let's move on. Where will India's first fully indigenous मतलब देसी, made in India, geothermal power plant being developed? So geothermal क्या होता है? Geo plus thermal. Thermal मतलब होता है हीट, जियो मतलब होता है अर्थ. जमीन के अंदर की जो अर्थ के अंदर जो हीट है, हीट इनसाइड द अर्थ विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट टू जनरेट एनर्जी. ये मतलब हुआ ना. So that's called as geothermal and it is considered as a renewable form of energy. Right? So right answer is option D, Arunachal Pradesh. The next question is on July 24, 2025, Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah unveiled the which policy? देखो मैंने आपको बताया है कीवर्ड मैचिंग. So of course he is a Minister of Cooperation, so cooperative policy. Please the right answer. मैंने बताया ना 70-80% केस में it works. ठीक है. Education policy will be released by Education Minister. रूरल डेवलपमेंट रूरल मिनिस्ट्री है ना. तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो और ऑफ कोर्स यू विल रीच. सो बी इज द राइट आंसर. यस, नकल के लिए अकल जरूरी है. राइट. हाँ, गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है. और ये सब काम करता है, मैंने देखा इवन क्लैट में मैंने से देखा है 2-3 क्वेश्चन. जैसे एक बार क्वेश्चन आया था मिंटिंग ऑफ कॉइन्स. ठीक है, 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था. मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, 4 ऑप्शन था. एक में जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें लिखा था मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समथिंग करके. तो भाई उसको मैच कराना था. और एक नहीं, बहुत मल्टीपल केसेस में आपको दिखाऊंगा कि ऐसा एग्जाम में होता है कि कीवर्ड से मैच कर गया और वो चांसेस हाई होता है. बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि 100% टाइम्स वर्क. ये 70 से 80% टाइम्स दिस लॉजिक वर्क्स. तो ठीक है, कोई बात नहीं, 20-30% तो रिस्क लेता ही आदमी, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. लेट्स मूव ऑन, है ना. The next one is what is India's rank in हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. और रैंक 1 किसका है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर्स निकालती है रैंकिंग. और रैंक 1 बताओ. Yes, 77 के आसपास है. हाँ, B is the right answer. And who has got rank 1? So it tells the strength of the passport. Rank 1 is Singapore. Great. सिंगापुर का, सिंगापुर या जापान का जनरली रहता है, मैंने देखा है. सो सिंगापुर रैंक 1 एंड 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है, देख रहे हो. और इंडिया का 77 है और 59 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस. ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. यस, नागलक्ष्मी राइट. हाँ. The next is which international legal body recently ruled that countries were obligated under international law to take action to reduce emission of greenhouse gas, and failure to do so would be considered as an internationally wrongful act. यानी हर कंट्रीज की एक जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करे. ऐसा नहीं करना इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना, का वॉल्यूशन एक तरह से. यस, हाँ, इसका जो आप ये पूछा ना कि ऑलमोस्ट ऑल कंट्री, यस, दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू हेनले पार्टनर्स. ठीक है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट. मैंने चेक नहीं किया है कि 193 कंट्रीज अलाउ करती है कि नहीं. पर जो इन्होंने बताया है वही मैंने आपको बता रहा हूं. ठीक है. हाँ, एंड दिस ऑफ कोर्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ही होता है आईसीजे का मोस्टली. बाइंडिंग वाइंडिंग बहुत कम ही होता है. ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर, आईसीजे. देखो एक चीज जानो, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज बाइंडिंग लिखा हुआ भी है ना, तो आप एग्जाम में मार्क करके आ जाओ बाइंडिंग. ठीक है. बट टेक्निकली इंटरनेशनल लेवल पे बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज देयर इज नो ग्लोबल पुलिस. बाइंडिंग को कोई बाइंड कराएगा तब तो, समझो ना. जैसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन इंडिया. इट मींस इफ इट इज वायलेटेड देयर हैज टू बी समवन हु शुड कम एंड एनफोर्स, एंड दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड इन सम केस हाई कोर्ट आल्सो. ठीक है. सिमिलरली जब हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो ठीक है, आप कागज पर लिख सकते हो कि बाइंडिंग है. यू कैन मार्क इट फॉर एग्जाम. हाँ, बट द थिंग इज हाउ
प्रैक्टिकली इट इज बाइंडिंग और नॉट. ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिकली बाइंडिंग नहीं होता है, हालांकि कागज पर लिखा होता है, इट इज रिटन इट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, बट इफ समवन वायलेट्स इट्स, सो नो पनिशमेंट इज डन. Yes. Khair. Let's move on to the next one. What does Dhruva policy introduced by Government of India aim to do? It is related with something called as DG pin. बीच से तोड़ दो, डिजिटल पिन कोड. हाँ, जियो coded address system. Yes. So basically the idea is everything is digitalized. All the address system will be digitalized. B is the right answer. पिन कोड से बात हो रही है रिलेटेड. पिन कोड इज रिलेटेड विद एड्रेस सिस्टम, है ना. जिससे आपको मान लीजिए कुछ डाक मंगवाते हो, मान लीजिए लेट्स से यू बाय समथिंग फ्रॉम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी से चीज, तो आप क्या करते हो, अपना एड्रेस डालते हो एंड यू राइट योर पिन कोड सो दैट द डिलीवरी शुड बी डन एट द राइट प्लेस, है ना. तो अब जो है डिजिटलाइज कर दिया जा रहा है. मे भी हो सकता है फ्यूचर में सिर्फ आपको अपना डीजी पिन टाइप समथिंग होगा, वो डालना पड़ेगा और आप तक पहुंच जाएगा घर तक, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, so B is the right answer. Let's move on. Who among the following became the first Indian to reach to the FIDE Women's World Cup? Yes, Indore has begun to implement using QR code, right? Rishi Sachdeva. Digital address. FIDE Women's World Cup. I think she has won also. उस टाइम पर फाइनल तक पहुंची थी. Divya Deshmukh from the state of Maharashtra. B is the right answer. ठीक है. So yes, yeah, she won against an Indian. I think किसको, कोनेरू हम्पी को हराया था ना, if I'm not wrong. So B is the right answer. खैर वो आगे आएगा, है ना. That will come. Let's move on to the next one. Which of the following countries signed free trade agreement with India? Modi ji visited in July and it was signed. मैंने इस पे सेपरेट क्लास लिया था, है ना. CETA was signed, है ना, Comprehensive Economic Trade Agreement. We have taken a separate class on it. यूके, गुड. हाँ, गुड गुड. और मैंने इस पे क्लास लिया, आप सर्च करना, है ना, इंडिया यूके FTA करियर लॉन्चर, ऐसे सर्च करना, यू विल गेट इट. हाँ. The next is, which of the following Indian state has emerged as a top performer in terms of economic development as highlighted in Morgan Stanley report? So option A, Maharashtra is the right answer to this question. Yes, Krishi Sachdeva, Adrija, you both are right. So Maharashtra set to join, अभी $1 trillion हुआ नहीं है, अभी currently $536 billion है. इसमें लगता है बिलियन में मिस कर गया. खैर चलो, उतना जानना नहीं है, बट नंबर्स उतना नहीं पूछेंगे, बट यू शुड नो Maharashtra is the right answer. The next is, what initiative is India's first center of excellence for hornbill conservation part of? Hornbill एक तरह की bird होती है. There is a hornbill festival in Nagaland also. Although hornbill is found in different parts of India. India's first center of excellence for hornbill conservation part of. The right answer is, I think, Tamil Nadu में ना, Annamalai. Yes, he is the right answer. Annamalai Tiger Reserve. ये होता है हॉर्नबिल. ठीक है, फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है इसको. मतलब इकोलॉजिकल रोल, मतलब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्रूशियल इकोलॉजिकल रोल है सीड डिस्पर्सर. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सीड ले जाने में हेल्पफुल होता है. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर. और इनके नाम पे नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं आपके जमाने में था कि नहीं, मेरे जमाने में एनसीईआरटी की एक बुक होती थी, हॉर्नबिल उस पर लिखा होता था. इंग्लिश की बुक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एनीवन हैज स्टडीड? क्लास 9 10th में था somewhere. The name of the book was Hornbill and I think it was an NCERT book, I guess an English book.
उस पर हॉर्नबिल की फोटो बनी होती थी, पता नहीं अब था कि नहीं, मेरे टाइम पे तो था पक्का, आई स्टिल रिमेंबर. यस, समवन इज राइटिंग, यस सर, ग्रेट. Let's move on to the next one. What is the likely global temperature increase by 2100 based on current policies? 11th ग्रेड में था शायद, हाँ बताओ. तो देखो होता क्या है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का टारगेट है कि अगर ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल में ये एवरेज टेम्परेचर था अर्थ का एक्स डिग्री, मान लो एग्जांपल, प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब बिफोर 1750 जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. So the Paris Climate Agreement says it should not go x plus 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, and ideally it should not cross x plus 1.5 डिग्री सेल्सियस. But इंसान तो सुनने वाले नहीं है. We are causing so much damage to the environment that most likely by the end of the century it will become x plus 3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, C is the right answer. The next one is PM Modi has recently surpassed to dash become the second longest serving prime minister. मतलब सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग इन कंटिन्यूअसली, इन कंटिन्यूअस टर्म कहीं पे लिख देते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब एक बार में बिना गैप के. दैट्स द आइडिया. हाँ ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी जी. सो डी इज द राइट आंसर. यस अद्रिजा एंड कृषि सचदेवा यू आर राइट. सो अगर आप देखोगे तो यहां पर ऐसा कुछ है कि ओवरऑल अगर आप टोटल देखोगे सो जवाहरलाल नेहरू जी 16 ईयर्स तक कंटिन्यूअस रहे थे. बट इंदिरा गांधी जी के साथ क्या है, देखो 15 ईयर्स 350 डेज नहीं, और यहां पर एक बार में 11 ईयर्स ही. सो दिस इज 1966 टू 77 का 10 ईयर है. ये दोनों मिला के शी हैज सर्व्ड इन 1966 टू 77 एंड 1980 टू 84. ठीक है. सो इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम इट इज 15 ईयर्स 350 डेज. अदरवाइज एक बार में इन वन गो शी हैड सर्व्ड फॉर 11 ईयर्स 59 डेज. अभी मोदी जी ने उसको तोड़ दिया ये वाला रिकॉर्ड. ठीक है. बट ओवरऑल में आप देखोगे अभी भी 11 ईयर समथिंग है ना, अभी तो बढ़ते रहेगा ये वाला. बट ही इज येट टू पास दिस टोटल वाला भी पास नहीं कर पाए. ठीक है. बट कंसेक्यूटिव कहोगे तो सेकंड लॉन्गेस्ट हो गया ना एक बार में. The next is who has been recently appointed as the new IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India chairman. The right answer is Mr. Ajay Seth. C is the right answer. तुहिन कांता पांडे तो आई थिंक सेबी के चेयरमैन है ना. C is the right answer. Yes. The next is what is the name of the trade agreement signed between India and UK? अरे तो होगी क्या, नाम उस वक्त नहीं था. हाँ नाम आ गया है, बताइए उस एग्रीमेंट का स्पेशल जो खास नाम है. मतलब ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह सकते हैं, बट टेक्निकली द वर्ड यूज इज सीटा, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट. खास के जब चार ऑप्शन दे देंगे, एक सीका लिख देंगे, एक सीपा लिख देंगे, एक सीटा लिख देंगे, तब वहां पे कंफ्यूज करोगे आप. सो सी इज द राइट आंसर. यस अद्रिजा एंड कृषि सचदेवा यू बोथ राइट. Comprehensive Economic Trade Agreement. Which High Court has issued India's first policy regulating the use of AI in judiciary? इस पर एडिटोरियल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कल. Yesterday we had done an editorial because है ना. Sir we should resolve the given mock. Resolve मैं समझा नहीं. Resolve. अच्छा रीसॉल्व पूछ रहे हो. हाँ मतलब एक बार मॉक दे दिया तो उसको एनालिसिस करोगे कहां पे मेरे से मिस्टेक हुई और उसको पूरा डिटेल में पढ़ो. दैट्स द आइडिया. उसके आसपास की चीजें. दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ रिसॉल्विंग. द राइट आंसर इज केरला हाई कोर्ट. ए इज द राइट आंसर है ना. यस अद्रिजा कृषि सचदेवा यू बोथ राइट. हाँ द नेक्स्ट वन इज पीएम मोदी रिसेंटली रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल किंग. कौन से राजा की याद में? Rajendra Chola is the right answer to this question. Established a city called as Gangai Konda Cholapuram in the state of Tamil Nadu. ठीक है. ये चोला एम्पायर हुआ करता था. यहाँ गंगाई कोंडा चोलापुरम है ना. ये पूरा ह्यूज सा था. यहाँ तक था इम्पैक्ट. यहाँ ये सब में भी. इवन श्रीलंका ऑल्सो.
The next one is what legal aid did NALSA recently launch for defense personnel? Defense personnel, ये पूछ सकते हैं. Those who are actually working in defense, for them. National Legal Service Authority, Article 39, capital A, talks about free and legal aid. Yes, वीर परिवार सहायता योजना. थोड़ा सा नाम से ही लग रहा वीर, ये सब वर्ड जो है मिलिट्री के सेंस में यूज भी किया था ना. तो आई हैव टोल्ड यू डिफेंस पर्सनल से रिलेटेड है. बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नालसा वीर परिवार सहायता योजना. स्टे एट द बॉर्डर, वी विल टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज. ठीक है, दैट्स द आइडिया. ठीक है, मैं इसे वर्ड क्यों बताया था ताकि एग्जाम में फिर ना याद रहता है कि अच्छा हाँ सर ने बताया था वीर करके, तो वीर तो मिलिट्री से रिलेटेड यूज किया जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इट हेल्प्स इन द एग्जाम. द गीलोंग ट्रीटी was signed between which two countries? So that one country can be provided with the nuclear powered submarine by the other one. ये ऑकस का पार्ट है, ऑकस था ना, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस. So यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंड यूके has signed it and it's a pillar 1 agreement, है ना. एसएसएन सबमरीन होता है एक तरह का, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. Is the right answer. Yes, Australia and UK. Yes, Adrija, Krishi, Sasdeva, you both are right. The next one is who won India's first individual gold medal at World University Games? The right answer is option D. Option B. साहिल राजेश यादव यहाँ पे है ना, गोल्ड. सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, यस आदित्य यू आर राइट. हाँ. द नेक्स्ट इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट कारगिल विजय दिवस और व्हाट इज द रीजन, है ना. अब ये कितना आसान क्वेश्चन है, डेट बता दो. अगेन आई हैव टोल्ड यू कीवर्ड, यहाँ कीवर्ड है कहीं पे मैच कर रहा है, देखो एक जगह मैच कर रहा हो गया. अब ये यहाँ पर आएगा, 70 से 80% चांस है कि यही वाला आंसर होगा, है ना. सो द राइट आंसर इज सी. और डेट बताइए 1999, कौन सा डेट? 26 जुलाई. Operation Vijay, Operation Safed Sagar, these all are related with Kargil war, and these are the PYQs asked in different exams. Yes, Krishi Sasdeva, Adrija, Nagalakshmi, you all right, है ना. Operation Vijay है ना, Operation Safed Sagar, ये दोनों पूछा हुआ एग्जाम्स में. ये आर्मी से रिलेटेड है, ये एयरफोर्स से रिलेटेड है, सफेद सागर. The next one is where is the proposed Long Island project being planned? कहां प्लान किया जा रहा, बताइए. The right answer is option B, सिंगापुर, लॉन्ग आइलैंड. ठीक है, 8 माइल लॉन्ग स्ट्रिंग है ना, अगेंस्ट डिफेंस अगेंस्ट राइजिंग सी. तो यहाँ पर इंडिया है, ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक जगह है सिंगापुर. यस, बी इज द राइट आंसर. यस, देवशीष देवा, नागालक्ष्मी, ऑल राइट. देखो ये है, मतलब यहाँ पे एक आइलैंड बनाया जा रहा ताकि जो समुद्र का ये आए उसको कंट्रोल कर सके, समथिंग लाइक दैट. Okay, the next one is where was India's first hydrogen powered train coach tested? The right answer is option C, ICF. Yes, Adrija, Krishi, Sasdeva, you are right. Integral Coach Factory, Chennai. ठीक है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन को. Yes. The next is which of the following MPs is a recipient of Sansad Ratan Award 2025? The right answer is option B, Supriya Sule. और भी लोगों को मिला, I think. Yes, good. The next is according to Morning Consult, who is the most popular Democratic leader in 2025? Morning Consult, I think, journal type का कह लो, news website type. So Modi ji, C is the right answer. ठीक है. Okay, let's move on to the next one. Ja, हो गया complete. So we are done with today's class.
एंड संडे को आज 8 PM पर मिलते हैं. लेट्स मीट टुडे एट 8 PM वेयर विल बी डिस्कसिंग स्टैटिक जीके. ठीक है. So yes, C is the right answer. Yes, Nagalakshmi, Krishi, Sasdeva, Drija, you all were right. So please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.